Hello. So I think I'm audible and the screen is also visible. So good morning. We'll start the lecture within a 2 minutes. So just share this link with the others. We'll start the lecture. Okay. We'll wait for 1 and 2 minutes. Then we'll start with the next part of the topic. The last lecture में ESC का first module का first part लिया था. So basic definitions. Today we'll start with the comparison with magnetic circuit with electrical circuit and what are the types of magnetic circuit, series and parallel. Uska comparison. Okay, sure. So we'll start with the part 2 of module 1. Okay, sure. Just share the link with others so everyone can join. Okay, and in the chat box, just check the audio and the screen is visible. Okay, sure. So those who are present, they can write down in the chat box. Okay, which you presented, put the chat box will Sure. We'll start with the lecture in 2 minutes. So now, okay, I know it's a Sunday, but we should complete the syllabus before the time, so you will get a plenty of time to revise the all the syllabus. Okay, so jaldi se we will complete it. Padhai part baki. Sure. So let's see कौन present है. Straight. So we are at the Tiwari, Vaishali, Mandar, electrical course student, very good. Okay, सब सो गया. Sure. Now it's a 9-3. We'll start at 9-4. Okay. So what are the number of students? It's a recording. If possible, they can go to the live. If possible, me, they can watch it after the report, after the live section. लेकिन today's topic is very important. तो जो लोग मिस करेंगे लाइव सेशन, तो थोड़ा लॉस होगा. Sure. So I think there is. So once it's a 9-4, let's start. Okay. Sure. 9-4 हो चुका है. So in the last lecture में क्या किया? एक बार रिवाइज करते. क्या था? So in the last lecture में magnetic flux देखा था. Magnetic flux मतलब ये पाई से कि मैग्नेट से कितने नंबर ऑफ magnetic force पास होते, magnetic lines पास होते. That is known as a magnetic flux. The unit is Weber. Okay. Then magnetic flux density देखा था. एक पर्टिकुलर एरिया में कितने magnetic lines of force है, कितने magnetic lines है. That is known as magnetic flux density. That is phi upon A. ठीक है, ये magnet है. This one is a magnet. एक magnet है. I'll use the. ये magnet है. और यहाँ से magnetic lines of force जाएगी. तो ये magnetic lines of force ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया. That is the phi upon A. Then उसके बाद what is the unit? Weber per meter square or Tesla. That is a capital. Then उसके बाद देखा था magnetic motive force. Magnetomotive force. It's same as EMF. सिर्फ EMF electrical circuit में आता है. Magnetomotive force it comes under the magnetic circuit. ठीक है? So that is the for flow of flux. कितना force लगने वाला? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कितना फोर्स लगने वाला है? That is EMF. फ्लक्स के फ्लो के लिए कितना फोर्स लगने वाला है? That is known as magnetomotive force. Simple. इसका फॉर्मूला हमने देखा था. That is N into I. फॉर्मूला देखा था हमने. That is N into I. This one. Number of turns into the current. And what is unit? Ampere turns and ampere. Then उसके बाद देखा था magnetic field strength. That is capital H. Magnetic field का कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना कैपेसिटी. That is known as H. Strength मतलब पावर. And what is the formula? See, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ टाइपिंग मिस्टेक में. तो H is equal to ampere turns by length. Ampere turns क्या?
mmf ना, so we can say it's mmf upon length. So make a change. यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था what is h, it's mmf upon length. So mmf का यूनिट क्या है, amperes या ampere turns, this is length. This is one more unit, newtons per meter. ठीक है, so what is h, mmf upon length. ये देखा था. Then मैं देखा था what is the different types of permeability. Permeability means there is a change in the system due to the medium. तो समझो दो मैग्नेट है मेरे पास, this is the magnet 1, this is the magnet 2. दोनों में कुछ भी नहीं, that is the air. So what is the permeability? It's the ability with which the magnetic material forces the magnetic flux through the medium. तो यहाँ से जो magnetic force जाने वाला है on second one, second से जो first जाने वाला है, उसके बीच में कौन सा मीडियम, उससे क्या प्रॉपर्टी चेंजेस होने वाला है, that is known as permeability. तो फॉर्मूला दिखा था, जब फ्री एयर होगा, सॉरी जब फ्री वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस होगा, मींस वैक्यूम मतलब देयर इज अ टोटली एब्सेंस ऑफ एयर, कुछ भी नहीं उसमें, एयर का एक भी प्रेजेंस नहीं, दैट इज नोन एज फ्री स्पेस. तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट और म्यू जीरो इज इक्वल टू बी जीरो अपॉन एच. तो बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट फ्री स्पेस, एंड एच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ठीक है, सो एच इज द सेम फॉर एवरीवन, कहां पे भी लेके जाओ एच, inside of water, in glass, in air, it's the same. Agar if medium is a different, other than vacuum, if medium is a different, other than a vacuum, if medium is a different, what is the formula? Mu is equal to B upon H. We don't know what is that medium. It sometimes it may be wood, it may be glass, it may be plastic, it may be rubber. कुछ भी ऐसा. And then in दोनों का comparison, क्या है comparison? That is a relative permeability. तो ये दिखा था. What is the final formula? Relative permeability. So this is the final formula. Mu r is equal to mu by mu naught. तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया तो what is mu is equal to mu r to mu. ठीक है, ये देखा था. Then उसके बाद रिलक्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, सेम देयर इज अ रिलक्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, फॉर्मूला इज S is equal to L mu 0 mu r upon E. ओके, mu 0 का वैल्यू इज अ कांस्टेंट, तो पता होना चाहिए. तो यस्टरडे मैंने सम्स लिए थे इन दी ऑफलाइन लेक्चर, तो म्यू 0 का वैल्यू मैंने बताया था, क्या है 4 पाई into 10⁻⁻⁷. ये वैल्यू एज इट इज जस्ट मग अप करो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, म्यू 0 4 पाई into 10⁻⁻⁷. ये एग्जाम में देने वाले नहीं, यू शुड नोट. हां, म्यू आर का वैल्यू एग्जाम में देंगे कि म्यू आर इज 1000 500 200 व्हाट इट इज. ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाट इज अ म्यू, सो म्यू इज म्यू आर इनटू म्यू. ये दोनों वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड. कभी-कभी एग्जाम में म्यू डायरेक्टली देता, permeability is 2000 or 200, that means it's a mu. ठीक है, relative permeability ऐसे वर्ड यूज किया then it's a mu. सिर्फ permeability वर्ड यूज किया that is a mu. So mu naught is a constant 4.10⁻⁷. mu r क्वेश्चन में दिया हुआ, if required sometimes they will give the permeability only and that value is mu. Okay, and what is the unit of reluctance? मैं देखा था ampere turns per Weber. Okay, ampere turns per Weber, that is it. So हमने सिर्फ मैग्नेट का बेसिक देखा, we just saw the magnet का basic. So today we'll start with the first part, that is a difference between magnetic circuit and electrical circuit. Okay, equation 4 mark को आता है in exam. Okay, compare the magnetic circuit with electrical circuit for the 4 marks, 2 marks को ऐसे ही पूछ सकते हैं. So we have multiple points. अभी मुझे पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है. So compare the magnetic circuit with respect to electrical circuit. पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे और उसके कंपैरिजन में we'll see the magnetic circuit. Okay, चलो, so let's see. सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, डायग्राम दिया. So let's compare the diagram. See, electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या आता है, सबसे पहले बेसिक क्या आएगा, एक EMF, एक बैटरी, दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रेजिस्टर, उसको कनेक्ट किया मैंने, एंड देयर इज अ करंट इज फ्लो, दिस करंट इज फ्लो. दिस इज बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट ना. तो अगर मुझे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेट क्रिएट करना है, मैग्नेट बनाना है, कैसे करेंगे, वी यूज वन मेटल, एक मेटल लेंगे, दिस इज वन ऑफ द मेटल, इनसाइड इट्स अ होलो. ओके, इनसाइड ऑफ होलो, इनसाइड उसमें थोड़ा सा होल, स्क्वायर होल. ओके, इसको मैग्नेट करना है, व्हाट विल डू, विल यूज अ कॉइल, एक वायर लेंगे, उसको बाउंड करेंगे, ऐसे बाउंड किया, these are the number of turns, और यहां से करंट पास करेंगे, and from this magnet there is a magnetic lines of force, it will pass. क्या बोला मैंने, there is a metal, उसको कन्वर्ट करना है मैग्नेट में, so एक वायर उसको बाउंड करेंगे,
current pass out there from that wire. So what will happen? From this metal, magnetic lines of force will pass. So this metal is converted into the magnet. So this wire, so supply करेंगे EMF से, this is E, it's I. Inside क्या flow है? Flux, and this is known as the area. तो देखो क्या क्या points है यहाँ पे? EMF, this is current, this is the wire, उसके endings, flux यहाँ से pass हो रहा है. Okay, this is the iron core, iron का metal है, and this is the area of cross section, that is A. So first comparison देखा क्या comparison है? What is a magnetic circuit, electrical circuit? Electrical circuit में भी है resistor. Okay, तो यहाँ पे reluctance है, दिखेगा नहीं, but we need to find. तो यहाँ पे क्या यूज किया? यूज ऑफ मेटल, आयरन मेटल. Okay, उसके ऊपर वायर माउंट किया. That is the first part of the magnetic circuit की comparison में. Second part देखो, what is the part? That is the definition. तो यहाँ पे जो first point मैंने यहाँ पे लिखा है, that is the definition. क्या है? What is electrical circuit? It is a closed path traced by the electrical current. Is known as electrical circuit. देखो ये closed path है क्या? Yes, ये close है ना. यहाँ पे कहाँ पे भी open नहीं. It's a closed path and traced by the electrical current. The closed path को कौन trace करने वाला है? That is by current. So current will flow from this circuit ना. So it's a closed path traced by the electrical current. इसमें changes किया तो क्या होगा देखो. Closed path, ये closed path है yes, it's also closed path and traced by magnetic lines of force, मतलब phi. तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल करंट की जगह पे क्या लिखना है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स. सो क्लोज पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस 2 पॉइंट. चलो फटाफट, वंस यू डन जस्ट इन्फॉर्म. तो फर्स्ट इज द डायग्राम एंड सेकंड इज द डेफिनेशन. तो बाकी के पॉइंट्स विल आल्सो सी. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस वन. And once you're done, just tell me it is diagram and point 1 is clear. क्या लिखना है? Diagram and point 1 is clear. So we'll start with the next one. चलो बराबर. So those are present. तो उन्होंने लिखना है chat box में the diagram and point 1 is clear. So we'll see the next one. चलो fast. This topic is very important. Comparison. ये question तो 100% आने वाला है. Every time होता है. What is the comparison between the magnetic circuit and electrical circuit for the 4 marks? तो आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना. Okay. Those who are done, कुछ भी डाउट नहीं है, you can write diagram and point 1 is clear. जिनको डाउट है, they can start with the कुछ भी डाउट हो तो just in the chat box, just say answer. ठीक, सबने लिखा है. वेरी गुड. सो वी हैव मंदार, रक्षित, आदित्य, नंदिनी, वैशाली. वेरी गुड. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. तो बाकी के पॉइंट्स लिखते हैं. बस यार ऊपर जाए. So this is second, third, fourth and fifth. Okay, चलो उसका फॉर्मूला देखिए. चलो सेकंड पॉइंट क्या देखो, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कौन सा? ये मैग्नेटिक. So what are the points? See, electromotive force EMF is a driving force in the electrical circuit. मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है? दैट इज अ करंट. करंट को कौन फ्लो करवाता है? दैट इज EMF. ओके, मतलब एग्जाम में स्टडी कौन करने वाला है? स्टूडेंट. लेकिन स्टडी कौन करवाता है? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड. तो व्हिच वन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? दैट इज वी आर, टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स. सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होने वाला है? दैट इज द करंट. लेकिन करंट को कौन भगाने वाला है? उसके पीछे किसका फोर्स है? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज अ ड्राइविंग फोर्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. उसका यूनिट क्या है? सेम यहाँ पे क्या होगा? In the magnetic circuit, which one is flowing? Magnetic flux. लेकिन magnetic flux को कौन फ्लो करने वाला है और इसको फ्लो फोर्स लगाने वाला है? That is the MMF, magnetomotive force. It's a driving force in the magnetic circuit. Same EMF, MMF, बस इतना डिफरेंस है.
And what is unit of mmf? Ampere turns. That is second point. ठीक है, simple है. तो EMF is a driving force, mmf is a driving force. Okay. So second point हुआ. Let's see the third point. The flow of electrons decide the current in conductor. जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना कम करंट. दैट इज द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना कम करंट. मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे डिपेंड करंट कितना है. सेम यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिसाइड द फ्लक्स. तो जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स, जितने कम जनरेट होंगे उतना कम फ्लक्स. Okay, so what is the third statement? The flow of electron decide the current, and the number of magnetic lines of force decide the flux. मतलब magnetic flux. Okay, that is the third point. So in between कुछ भी doubt होगा, you can use the chat box. Okay, simple terms. Fourth point, current in the electric circuit which is measured in ampere. तो यहाँ पे जो कुछ भी current है, किसमें measure हो रहा है? That is in ampere. Current की जगह पे magnetic circuit में क्या है? Flux. Okay, current की जगह पे magnetic तो सर्किट में क्या फ्लक्स, एंड फ्लक्स किसमें मेजर करते हैं? वेबर. सो फ्लक्स फाई इन द मैग्नेटिक सर्किट व्हिच इज अ मेजर इन द वेपर. दैट इज द फोर्थ पॉइंट. सिंपल है. लास्ट पॉइंट, दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस. रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, करंट. उसको कौन रोकने वाला है, अपोज करने वाला है? दैट इज रेजिस्टेंस. We can say resistor, whatever is a resistor, and value क्या है? resistor. तो उसका यूनिट क्या है? ओम. सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक सर्किट में, the magnetic line of force, that is magnetic flux flow हो रहा है ना, उसको कौन स्टॉप करेगा, अपोज कौन करेगा? that is a reluctance. So reluctance S is opposed by the magnetic part to the flux. तो magnetic flux को कौन अपोज करने वाला है? that is a reluctance. तो रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या है? that is a resistor. क्या? S. okay, that is a basic. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन अपोज करने वाला है? दैट इज द एस. रिलक्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट को कौन अपोज करने वाला है? इट इज रेजिस्टर. एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? एम्पियर टर्न पर वेपर. ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेपर. चलो, तो दीस आर द 5 पॉइंट. जस्ट गो थ्रू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. पहले 5 पॉइंट गो थ्रू करो, देन विल सी द लास्ट 6, 8, 9, 10. ओके, सो इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट पॉइंट 2 to 5 इज क्लियर. तो कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, आई विल गिव द आंसर. रिवाइज करना फिर से तो आल्सो रिवाइज इट. कुछ भी डाउट नहीं तो पॉइंट 2 to पॉइंट 5 इज क्लियर. ठीक है, चलो फटाफट. चलो, तो अभी 10 हो गए. बाकी सब कहाँ पे थे? इतना लेट ज्वाइन किया, किसी ने उठा होगा ना? अरे चल चल, अच्छा टॉपिक है, कुछ समझ के लेते. उठा होगा किसी को फोन कर. So in the chat box you can write point 2 to point 5 is clear. Then we'll see point 6. कुछ भी डाउट है तो यूज स्पेसिफिक डाउट. ओके, राहुल ने लिखा है, अदर्स और यू कैन आल्सो राइट. रचित ने लिखा है, आदित्य ने लिखा है. गुड. नंदा आल्सो देयर. चलो, बाकी सब जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. जो प्रेजेंट है उनको अटेंडेंस मिलने वाला है. So, जो लगा के भाग गए they will not get anything. Okay, so सिर्फ ऑन करके रखा है, बाद में सो गया. It's no use. So I shall also there others. चिन्मय अभी आ गया. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो मेजर के स्टूडेंट्स में डाला. So let's start with the next one. Next one is 6 one. 6 one में रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस का फार्मूला है. रिलक्टेंस का तो फार्मूला मुझे पता है, S is equal to L divided by mu naught mu r into A. इन दोनों को मिला के we can get V also. Okay. Now रेजिस्टेंस का फार्मूला ये कहाँ से आ गया? Okay. तो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी, उसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? ओके, सी रेजिस्टेंस का फार्मूला वी कैन आल्सो राइट V upon I. वी कैन गेट V upon I. ओके, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल
रेजिस्टर का V अपॉन I ये फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट। अगर मुझे मटेरियल से चेक करना है, तो यहाँ पे मटेरियल चेक किया ना, रिलक्टेंस, लेंथ, एरिया, मीडियम, मतलब ये मटेरियल एंड वो कहाँ पे मटेरियल उसके अकॉर्डिंग चेक किया। तो रजिस्टर भी मटेरियल कौन सा है, उसका लेंथ, एरिया, कौन से मीडियम, किससे बना है, तो वो चेक करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टर, इट इज R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। सी कैसे याद रखना है इसको, लेंथ एज इट इज, एरिया एज इट इज, दोनों टर्म तो सेम है, सिर्फ 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, इसके जगह पे क्या लिखना है, दिस रेजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, उसको कहते हैं रो, RHO, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इट इज रो, HO। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर की जगह पे थोड़ा बेंडेड पी, थोड़ा पी थोड़ा बेंड करना, ओके, दैट इज नोन एज रो। तो ग्रीक एंड लैटिन सिंबल से इज रो, ओके, तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर की जगह पे रो लिख, देन रेजिस्टिविटी, ओके, दैट इज द सिक्स्थ वन। देन अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है, करंट, तो बेसिक ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू IR, ई में करंट क्या आएगा, E अपॉन R और V अपॉन R, तो सेम यहाँ पे लिखा देखो, व्हाट इज द करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। सेम अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या चेंजेस होंगे, फ्लक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो देयर इज वन मोर फार्मूला, सी क्या फार्मूला, MMF, EMF की जगह क्या होगा चेंजेस, MMF। सी करंट एंड फ्लक्स बोथ आर सेम ना, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है, ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो, तो करंट की जगह पे आई कैन राइट फ्लक्स, EMF की जगह पे आई राइट MMF, बिकॉज़ दोनों का जॉब सेम है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, एंड रेजिस्टर की जगह पे आई राइट रिलक्टेंस, बस। तो EMF, MMF, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, करंट एंड फ्लक्स, खत्म हो गया, सिंपल है ना। करंट की जगह पे राइट फ्लक्स, EMF की जगह पे राइट MMF, रेजिस्टेंस की जगह पे रिलक्टेंस, एवरीवन इज सेम, I is same as flux, EMF is same as MMF, resistance is same as reactance, खत्म, बेसिक ओम लॉ यूज किया, ठीक है, इट्स योर सेवेंथ फॉर्मूला। देन विल सी द एट वन, इसने दिया करंट का डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में आपने कितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया, ओके, कि समझो एक कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें से आपका एरिया कितना, व्हाट इज योर डेंसिटी, ओके, तो सेम करंट इज फ्लोइंग, लेकिन करंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी, सो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना, मतलब फ्लक्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, फ्लक्स अपॉन एरिया, से करंट डेंसिटी क्या होगा, इसे डेल, ओके, तो ये क्या होगा, करंट अपॉन एरिया, ओके, तो ये नोटेशन कैसा है, इट्स लाइक S, यहाँ पे क्लोज करो, S बनाओ और यहाँ पे क्लोज करो, डेल, इसे टोनर डेल, DL, सेम फ्लक्स डेंसिटी B क्या है, फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है, दैट इज 7 पॉइंट। So anyone any doubt in the 6, 7, 8 formula था, हमने formula डिस्कस किया, okay, just go through it, the chat box you can write 0.6 to 8 is clear, ठीक है, so कुछ भी डाउट होगा in the formula you can ask me in the chat box, चलो बराबर, सिंपल क्वेश्चन है, ओके, कंपैरिजन में आ सकता है, you should get at least 5 to 6 पॉइंट, अगर 4 मार्क का पूछा है you should at least get 5 to 6 पॉइंट, डायग्राम के साथ, फॉर्मूला के साथ, स्टेटमेंट के साथ। चलो जल्दी, चलो आदित्य ने लिखा है 0.6 to 8 is clear, दर्शित ने भी लिखा है, मंदारी बोल सकते हैं, दर्शित ने लिखा है, राहुल ने लिखा है, तो आदित्य यस्टरडे कहाँ पे थे, रिसोर्स लिए ना, वो यू एब्सेंट, नंदिनी आल्सो देयर, वैशाली आल्सो देयर, गुड, should anyone in doubt,
चलो तो सबने लिखा है देखो. So let's start with the next one. जो next point है उसको डिस्कस करते हैं. So last 3 point बाकी. Then we'll see the series and pattern. See 9, 10, 11 क्या दिखा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट. Kirchhoff's current law and voltage law is applicable to the electrical circuit. Electrical circuit में दो फॉर्मूले हैं ना, KVL, KCL. Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या फॉलो करता है? KVL and KCL. तो मैग्नेटिक सर्किट पे क्या होगा? तो दिस इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट और वी कैन से दिस एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल करंट. तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट दैट इज ये चेंज है. दिस डू दिस चेंज. So KVL and KCL is applicable to the electrical circuit. तो इसके जगह पे क्या लिखना है? That is C. Current की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? That is a flux. Current is same as flux ना. And voltage मतलब EMF की जगह पे we can write MMF. So Kirchhoff's current law. तो current की जगह पे we can write the flux. तो Kirchhoff flux law. Okay. And Kirchhoff's voltage law. Voltage मतलब EMF. So we can write Kirchhoff's MMF law. तो सेम लिखा उन्होंने. Kirchhoff's current law की जगह पे we can write Kirchhoff's flux law and Kirchhoff voltage law, that is EMF. We can write Kirchhoff's MMF law. So Kirchhoff MMF law and flux law is applicable to the magnetic circuit. Same लिखा है. So KVL is replaced by Kirchhoff's MMF law. KCL, that is Kirchhoff's current law, is replaced by Kirchhoff flux law. Current की जगह पे क्या लिखना है? Flux. Voltage which is same as EMF उसकी जगह पे क्या लिखना है? Kirchhoff's MMF law. खत्म. Let's go to it. यहाँ पे कुछ भी डाउट है? सिर्फ यहाँ पे सर्किट बना के यहाँ पे बाय मिस्टेक फ्लक्स हुआ है. टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज सर्किट. नेक्स्ट पॉइंट. So in the electrical circuit the current actually flows. There is a moment of electron. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है. Okay. So current is actually flows, that is there is a movement of electrons. लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में we say that flux is flowing, लेकिन flux actually में flow नहीं होता. Flux does not flow in the sense in which the current flows in electric circuit. तो जो सेंस में करंट फ्लो होने वाला उस सेंस में फ्लक्स नहीं फ्लो. सी ये रजिस्टर है और यहाँ पे सप्लाई. तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे. लेकिन जब हम मेटल लेते हैं ना, मेटल और यहाँ पे से वायर तो यहाँ से फ्लक्स फ्लो होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी रीजन कवर होगा ना, ये भी रीजन कवर. मतलब क्या होता है? व्हेन यू सी द मैग्नेट ना, मैग्नेट के अंदर से भी फ्लक्स पास होता है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे फ्लक्स फ्लो होता है. साइमल्टेनियसली नॉर्थ टू साउथ बाहर से फ्लो होता है ना. तो जैसे करंट फ्लो हो रहा है सेम सेंस ऑफ फ्लक्स नहीं फ्लो होगा. फ्लक्स इज आल्सो फ्लोइंग, लेकिन सेम सेंस में फ्लो हो रहा है. क्या आंसर है? करंट सर्किट के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन फ्लक्स जा सकता है बिकॉज़ इट्स अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. वो एरिया कवर करता है, इट कवर्स द एरिया. सो मैग्नेट के अंदर भी फ्लक्स फ्लो हो रहा है, मैग्नेट के बाहर भी फ्लक्स फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ. तो जिस सेंस में करंट फ्लो है सेम सेंस में, सेम वे में फ्लक्स इज नॉट देयर. ओके. सो उन्होंने क्या बोला है? जस्ट रीड इट वंस अगेन. In magnetic circuit, a flux does not flow in the sense in which the current flows in electric circuit. Electrical circuit में जो current flows हो रहा है same sense में, same way में flux नहीं flow होता है, because current इस loop के बाहर नहीं जा सकता electrical circuit के, लेकिन flux बाहर जा सकता है. So inside flux कैसे flow होता है? Inside the magnet south to north, outside कैसे जा रहा है? North to south. Outside मतलब जो boundary है उसके बाहर भी flow हो रहा है ना, लेकिन करंट बाउंड्री के बाहर नहीं फ्लो होता है. ओके. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ फ्लो. सो 10 पॉइंट इज क्लियर एवरीवन. तो कुछ भी डाउट अगर पूछो. सो 9 and 10 इज क्लियर. देन द लास्ट वन इज एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट. तो कंटीन्यूअसली करंट फ्लो करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. जिस टाइम आपने एनर्जी स्टॉप किया, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा. If you want a water, then tap should be on. जिस मोमेंट पे आपने टैप बंद किया, flow of water is over, खत्म हो जाएगा. तो if you want to current flow continuously, electron flow continuously, एनर्जी देना पड़ेगा continuously. एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी. जो मोमेंट पे आपने स्टॉप किया वो मोमेंट पे स्टॉप हो जाएगा.
मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। आपको अगर मैग्नेट बनाना है, आपने मैग्नेट बना लिया, उसके बाद यू कैन यूज दैट मैग्नेट। सी, जो हम घर पे यूज करते हैं ना मैग्नेट, वो नेचुरल मैग्नेट नहीं होता, वो फैक्ट्री में बनाते। नेचुरल मैग्नेट इज टू कॉस्टली। तो घर पे हम लोग जो बचपन में खेलते थे ना मैग्नेट, इट्स अ मैनमेड मैग्नेट, वो बनाते इन इंडस्ट्री, इन कंपनी। तो एक बार बनाने के बाद उसको कुछ सप्लाई रिक्वायर्ड है कि चार्जिंग करो उसको, नहीं। एक बार कंपनी ने बना के, वो बनाने के बाद वी कैन यूज एट होम फॉर मल्टीपल वर्क, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। सो कंटिन्यूअसली एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। एक बार एनर्जी दे दो, उसके बाद यू कैन यूज। जब तक वो एनर्जी जीरो नहीं होता तब तक वी कैन यूज। लेकिन यहाँ पे वैसे है कि नहीं, जब तक स्विच ऑन है तब तक फैन चलेगा, मतलब करंट इज। जिस मोमेंट पे आपने स्विच ऑफ किया, द करंट इज ऑफ, मतलब फैन इज ऑफ। यहाँ पे ऐसे एक बार मैग्नेट बना लिया, यू कैन यूज इट जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। तो मेंटेनेंस के लिए यू डू नॉट रिक्वायर दैट एनर्जी। तो जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक चलेगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो जस्ट गो टू द 9, 10, 11। यहाँ पे सर्किट है, just go to 9, 10, 11. Okay? So point 9 to 11 is clear. Okay, चलो बराबर। So any doubt in the 9, 10, 11 conceptual point? Okay, concept, basic concept. तो the 11 point मैंने दिया है, you can write 11 point plus diagram, मतलब 12 points. तो एग्जाम में if they ask you what is the difference between magnetic circuit and electrical circuit, diagram सबसे पहले आना चाहिए, and then write any 4 point. सब फॉर्मूला लिख के डालो मत, एटलीस्ट एक फॉर्मूला यूज करो एस फ्लक्स डेंसिटी में से कोई भी एक, बाकी सब पॉइंट्स लिखो। ओके, इफ यू वांट टू राइट 4 पॉइंट्स, डायग्राम आना चाहिए, उसके बाद 4 पॉइंट आना चाहिए, उस 4 में से एक फॉर्मूला आना चाहिए, इतना ही आता है। 6, 7, 8 इसमें से एक लाइन। ऐसे मत करो कि डायग्राम बनाए बाकी सब फॉर्मूले, ऐसे मत करो। ओके, एटलीस्ट राइट फ्यू सेंटेंस पॉइंट। चलो, वैशाली, चिन्मय, आदित्य, रचित, राहुल सबने लिखा है पॉइंट 9 to 11 इज क्लियर। चलो बाकी सब। नाउ लेट्स सी द, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज एंड पैरेलल ऐसे थे ना, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम कांसेप्ट देखेंगे इन द मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है, मैग्नेटिक सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड। ओके, सो विल सी द सेम पॉइंट। चलो, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले सीरीज देखते हैं बिकॉज़ थोड़ा इजी। So first I'll show the diagram. From the diagram you can understand. Okay. Now series magnetic circuit मतलब क्या है, कि मेरे पास कुछ मेटल्स है, उसको मैंने सीरीज में कनेक्टेड किया। ओके, तो हमने जो कुछ भी एग्जांपल लिया दैट इज आयन रिंग ना। यस्टरडे जो कुछ भी सम सॉल्व किया दैट इज बेस्ड ऑन आयन, बिकॉज़ आयन को वी कैन कन्वर्ट इनटू मेटल, नॉर्मल आयन। So iron ring मुझे बनाना है by using multiple components में multiple iron materials जिसका साइज लेंथ ऊपर नीचे हो सकता है। लाइक मुझे सीरीज में रजिस्टर लगाना है, तो फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर ऐसे करते हैं। उससे अगर मुझे आयरन रिंग बनाना है तो मल्टीपल आयरन मटेरियल्स जिसका साइज एंड लेंथ चेंज हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे, सी दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आयरन, इसका साइज देखो कितना है, लेंथ कितना है। उसके बाद मैंने अनदर आयन का एक मेटल जॉइंट किया, उसका साइज एंड लेंथ देखो कितना बड़ा है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा जॉइंट किया, दिस इज थर्ड, इसका साइज एंड लेंथ छोटा है। तो सेम यहाँ पे डायग्राम पे ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो मैंने 3 आयन के मटेरियल कनेक्ट किए टू फॉर्म अ रिंग, टू फॉर्म अ रिंग। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल, थर्ड मटेरियल, ऑल आर आयन, सबका लेंथ एंड एरिया इज डिफरेंट। तीनों आयन है, इट फॉर्म अ रिंग। ये तीनों का साइज, लेंथ एंड एरिया इज डिफरेंट। तो फर्स्ट मटेरियल देखो, इसका लेंथ कितना है, दिस इज L1। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल 1, इट्स आयन ओनली। इसमें से कौन सा फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज 5।
ओके, इसका एरिया कितना है? दिस एरिया इज E1. Let's see the material 2, this is second material, इसका लेंथ कितना है? This length is L2, यहाँ पे लिखा है. इसका एरिया कितना है? That is E2. The last one is, this is third one, length is L3 and area is E3. इन को सर्कल में कनेक्ट किया, सबका साइज लेंथ डिफरेंट है, याद रखो. देन सेकंड के उसमें मैंने एक वायर बाउंड किया. So 1 second I bound the wire and उसमें से करंट पास किया. So what will happen? Magnetic flux is generated. Magnetic flux generate होगा पास होगा. अभी बहुत लोगों को डाउट आएगा कि वायर तो यहाँ पे माउंट किया है, तो फ्लक्स यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ पे कैसे पास होगा? तो सेकंड मेटल पे अगर मैंने वायर बाउंड किया है तो सिर्फ सेकंड से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना चाहिए. फर्स्ट एंड थर्ड में से क्यों पास हुआ? सी, जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है. जो करंट रजिस्टर 1 से पास हुआ है, सेम करंट रजिस्टर 2 से पास होगा, सेम करंट रजिस्टर 3 से पास होगा. तो यहाँ पे भी सेम है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड से पास हो रहा है सेम फर्स्ट एंड थर्ड से पास होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. करंट को कैसे रिप्लेस करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में? फ्लक्स से. तो जो करंट रजिस्टर 1 से पास हो रहा है सेम करंट रजिस्टर 2 एंड 3 से पास हो. जो फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है सेम सेकंड एंड थर्ड से पास होगा, फर्स्ट एंड थर्ड से. ठीक है, तो सेम फ्लक्स इज पासिंग. बस इतना ही है. सो मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3 all are connected in series and same flux is flowing from them. Same flux is flowing from them. ठीक है, तो कैसे आएगा? लेट्स सी. तो एक बार यहाँ पे रजिस्टर दिया, देखो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 कनेक्टेड इन ईएमएफ, उसको सर्कल फॉर्म में दिया है, मतलब सेम कांसेप्ट वी आर यूजिंग. ठीक है, सो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ इट इज IR ना, लेकिन एमएफ का फॉर्मूला क्या है? N into I, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू द करंट. तो यहाँ पे करंट इज सेम ना, इन द सीरीज करंट इज सेम, इट इज I1, I2, I3, तीनों सेम होते हैं सीरीज में, सेम. phi is equal to phi 1, phi 2, phi 3 because current and flux both are same. देन यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दिया रजिस्टर का. क्यों? कंपैरिजन. रजिस्टर में मैग्नेटिक सर्किट कैसे कंपेयर कर सकते हैं सीरीज में. उसके बाद इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है? टोटल रेजिस्टेंस सो इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है? सबका एडिशन में R1 R2 R3. तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस रिप्लेस बाय रिलक्टेंस S1 plus S2 plus S3, दैट इज अ टोटल रिलक्टेंस. ओके, तो ये भी पॉइंट भी क्लियर. फिर से बताने वाला स्टेप बाय स्टेप, एक बार देखिए. ठीक है, ये पॉइंट लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर लिखा है वो कंप्लीट. नाउ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट स्टार्टिंग से देखिए. व्हाट इज द डेफिनेशन? इसको जूम करता हूं थोड़ा सा. So what is series magnetic circuit? When different magnetic materials having different lengths, cross section area and permeability are connected one after another, in which the same flux is established in a different section, is called as series magnetic circuit. तो ऐसे magnetic material जिसका लेंथ डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, परमेबिलिटी डिफरेंट है, उनको मैंने कनेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. तो क्या होगा? सेम फ्लक्स फॉर्म होगा. So this is known as series magnetic circuit. तो एग्जाम में पूछा what is a series magnetic circuit? First of all, you should write the definition. क्या है? When different magnetic material जिसका length different है, area different है, permeability different है, उनको one after another, एक के बाद एक, continuous manner में, लेकिन ring आना चाहिए, connect किया, so that same flux is flowing. That is known as a magnetic circuit in series. So let's consider a ring made up of different material of length L1, L2, L3. Of cross section area A1 into A3 with absolute permeability mu1 mu2 mu3. तो तीन मटेरियल है जिन्होंने रिंग फॉर्म किया है कंटीन्यूअस मैनर में, जिनका लेंथ L1 L2 L3 है, जिनका एरिया A1 A2 A3 है, जिनका परमेबिलिटी mu1 mu2 mu3.
ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है? Any doubt till this point? So you can write introduction, or you can write intro of series magnetic circuit is clear. And then see the diagram once. The definition and this point. इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो, else you can write intro of series MC is clear. MC मतलब magnetic circuit. You can write this thing in the chat box. Okay? कुछ भी डाउट है तो पूछो. फिर से देखने वाले diagram and further. Okay? Just write on this point. Intro of series MC is clear. So let's see कौन-कौन present है. चलो जल्दी. तो रचित ने लिखा है others you can also write. So Mandara is there. Good. So any doubt others? बाकी सब लोग सो गए? ठीक है. चलो let's see the next one. So only those who are present in the chat box उनको मिलने वाला है. Okay, टाइम पे आना चाहिए. उसका डायग्राम मैंने पता है कि दिस इज मटेरियल 1, इसका उसका लेंथ 1, एरिया 1. दिस इज मटेरियल 2, उसका लेंथ 2, एरिया 2. दिस इज मटेरियल 3, लेंथ 3, एरिया 3. तीनों ने सर्कल में कनेक्ट किया. इसका प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर. जैसे ड्रॉ किया सी, यहाँ पे एक वायर बाउंड किया. दिस इज अ करंट and same flux is flowing because they are connected in series. Okay? So do the practice of this diagram. Yes, important है question. So do the practice of this diagram. ठीक है, याद रखो. Then next क्या? Let a coil bound on a ring has n turns carrying the current I. तो जो वायर बाउंड किया था, ओके, जो वायर बाउंड किया था उससे कितने टर्न्स है? n. क्या करंट पास हो रहा है? I. So what is mmf? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट. क्योंकि वायर तो एक ही मटेरियल में बाउंड किया ना. देखो यहाँ पे तो वायर तो एक ही मटेरियल में बाउंड किया है फॉर दिस वन ओनली. तो नंबर ऑफ टर्न्स इज n and सेम करंट पास हो रहा है ना, that is I. Because series में connected, same flux, same current is passing. Okay? That is the I. Now the next one is this will set the flux, which is same through all the elements of the series magnetic circuit. तो यहाँ से क्या होगा? When you pass the current through this coil ना, same flux pass होगा because of the series connection. So what is the flux? Phi is equal to phi 1, phi 2, phi 3. All three are same because they are connected series. जैसे I series circuit में current is same in series circuit, same flux is same in the series circuit. Phi is equal to phi 1, phi 2, phi 3. So उन्होंने क्या लिखा है? Same flux will pass. This will set the flux which is same throughout all the elements of series magnetic circuit. ये लिखा है. उसके बाद this is similar to three resistors connected in a series electric circuit with EMF carrying the same current. तो ये once they know कि ये पास हुआ है, same flux पास हो रहा है, किसका लॉजिक है? ये लॉजिक सेम एज तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड. तो सेम लॉजिक यूज किया. वी कैन ड्रॉ द सेम सर्किट. ऊपर वाला जो सर्किट है उसका लॉजिक सेम एज सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस. तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ. ठीक है, तो एग्जाम में नॉट रिक्वायर ये डायग्राम. ओके, यू कैन ड्रॉ वेल एंड नहीं करने का भी चलेगा.
the next one is reluctance कैसे find out करना. So before the reluctance, we'll go through it once again. क्या डायग्राम में क्या क्या लाना है कि डायग्राम एंड कंसेप्ट इज क्लियर. तो चैट बॉक्स में क्या लिखना है, ये डायग्राम और नीचे वाला जो कंसेप्ट है ना फ्लक्स वाला, दैट इज क्लियर. देन विल स्टार्ट विद द रिलक्टेंस कैसे फाइंड आउट. ओके, सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स दिस डायग्राम एंड नीचे वाला कंसेप्ट फ्लक्स वाला कि बाय और फ्लक्स आर सेम इज क्लियर. ठीक है, चलो बराबर. So any doubt anyone? Just write diagram and concept is clear. And then we'll see कि reluctance कैसे find out किया. जैसे resistance find out करते हैं ना I1 plus I2 plus R2. जैसे reluctance कैसे find out किया. Okay, and then we'll stop. The next lecture we'll start with the parallel circuit. So Rashid ने लिखा है, very good. Others you can also write. So any doubt anyone? Good. So Mumtaz Vaishali you also present. So let's do the next one. So next point क्या देखो, अगर तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इज R1 plus R2 plus R. सिमिलरली रिलक्टेंस कैसे होगा, टोटल रिलक्टेंस इज S1 plus S2 plus S3. ओके, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 plus R2 plus R. अगर तीन रेजिस्टर सीरीज में होगा तो तीन मटेरियल मैग्नेटिक सर्किट के सीरीज में तो क्या होगा, ST is equal to S1 S2 plus S3. Now what is S? S is L upon mu है ना, यहाँ पे mu क्या है, mu 0 mu है. जूम करता हूँ. So what is total reluctance? S1 plus S2 plus S3. And what is S? S is L upon mu 0 mu R into A. Mu 0 mu R दोनों को मिला के क्या होता है, mu 0 into mu R. It's a mu. So mu. Okay. See, तो अभी S1 क्या होगा, S1 is equal to L1 mu1 A. S2 क्या होगा, S2 L2 mu2 A2. S3 क्या होगा, S3 L3 A3 mu. खत्म. यहाँ पे दूसरे S1 दूसरे S2 दूसरे S3 समझा, by using this one. ये mu कहाँ से है, mu is same as mu naught and mu1. ठीक है, तो तीनों आ गए. What we'll do? Let's see the next part. Now, उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स. जैसे करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर, मतलब ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द टोटल करंट, टोटल वोल्टेज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो फ्लक्स क्या होगा, दैट इज अ टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय टोटल रिलक्टेंस. इसे होगा ना, ईएमएफ की जगह पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस की जगह पे रिलक्टेंस. तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल एस. सो व्हाट इज द टोटल एमएमएफ, ये टोटल एस यहां पे जाएगा. फाइव द सेम, सबका फाइव सेम, इसे सबका करंट सेम होता है, फाइव सेम. तो टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, 5 into टोटल एस. व्हाट इज टोटल एस, तो यहाँ पे कैसे बताओ, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, टोटल एमएमएफ इज इक्वल टू 5 into टोटल एस. टोटल एस क्या है, S1 plus S2 plus S3. तो यहाँ पे ओपन करो, 5 into S1 5 into S2 5 into S3 5 into S1 5 into S2 5 into S3. Now what is MMF?
एमएफ का फॉर्मूला देखो क्या है, इट्स 5 into s ना, 5 टोटल s। तो ये क्या होगा 5s1, इट्स एमएफ1 पहले मटेरियल का एमएफ1, 5 सेकेंड मटेरियल का एमएफ, थर्ड मटेरियल का एमएफ। सो व्हाट इज द फाइनल एमएफ, एमएफ1 एमएफ2 एमएफ3। जैसे हमने देखा था ना सीरीज सर्किट में, रेजिस्टर 1 रेजिस्टर 2 रेजिस्टर 3, दिस इज द वोल्टेज। तो कैसे लिखा था, वोल्टेज क्या है V1 plus V2 plus V3। Say EMF1 EMF is equal to EMF1 EMF2 EMF3। Say MF is equal to MF1 MF2 MF3। ये सेम कंसेप्ट यूज किया है सीरीज सर्किट का, सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, टोटल S1 plus S2 plus S3। अगर ये डायरेक्टली पता नहीं तो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग L U and A। जैसे I is equal to V upon R रहता है, सेम V is MF, R is reluctance। ओके, तो यहाँ से हमें MF फाइंड आउट किया, this part is MF1, this part is MF2, this part is MF3। सेम V is equal to V1 plus V2 plus V3। ओके, just go through this। एक क्या क्या लिखना है कि concept of reluctance in सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इज क्लियर। चैट बॉक्स में क्या लिखना है, कंसेप्ट ऑफ रिलक्टेंस इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इज क्लियर। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, एसएमसी मतलब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इज क्लियर। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, देन ओनली यू कैन रिमेंबर। एंड प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड बिकॉज़ एग्जाम तो रिटन है, written practice is required। Okay? So in the next lecture we'll start with the parallel magnetic circuit। Okay? वो एक बाद we'll start with the dynamic EMF, that is static and induced। Okay? Dynamic, static, इसमें mutual, static को start करें। So any doubt, anyone? Use the chat box and just give the answer। Yeah, the concept of reluctance in SMC is clear, very good। Param is there, Param Aptalas, Nokar, so Param, Rahul, Vaishali, Akush, anyone? We'll also take the sums once again। Okay, एक बार ये टॉपिक खत्म हो तो जैसे मैंने मॉड्यूल 2 का सब सम्स एक ही वीडियो में लिया था, सेम मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 का सब सम आई टेक इन वन। सो डोंट वरी, तो जिन्होंने यस्टरडे का लेक्चर मिस किया विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट, और आई विल टेक द लाइव लेक्चर फॉर दैट सम वंस दिस टॉपिक इज ओवर। So any doubt, anyone? Sure, कुछ भी नहीं, let's see। Rashid also there, Aditya। So एक बार देख लेते हैं क्या क्या बात की। सीरीज सर्किट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा, ठीक है, दिस वन। देखो मैं तीनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया, तीनों रेजिस्टर पैरेलल, सेम पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा उसका डायग्राम फॉर्मूला सब कुछ है। एंड देन डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट का हमने देखा था ना, डिस्टिंग्विश टेबल, एक में V से, एक में I से, एक में रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या आता है टोटल का, वहां पे क्या है 3.6 खत्म। तो सेम सीरीज सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में व्हाट आर द डिस्टिंग्विश टेबल, ये देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल सी द पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ये वाला देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, इट्स अ पार्ट 3। एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज BH का क्या होता है, then what is the Faraday's law, Faraday's second first law, Lenz's law, right hand rule, ये सब देखेंगे। देन उसके बाद इंड्यूस वाला, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ डायनामिकली कैसे इंड्यूस होता है, स्टैटिक कैसे इंड्यूस होता है। स्टैटिक में दो टाइप, सेल्फ एंड म्यूचुअल। ये होने के बाद विल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट, दैट इज हिस्टैरिसीस लॉ, उसका लॉस क्या होता है। देन इट्स ओवर, ठीक है, देन दिस टॉपिक इज ओवर।
Anyone that you want to share? Serial also there. Sure. So now what you will do? Just in the chat box, write your name and then we'll stop. Okay. Sure. So those who are present, they can write your name. जो continuously present in the chat box, only they will get the attendance. So time पे मैंने जो पूछा time पे आंसर दिया, only they will get the attendance. Okay. Just in the chat box, write your name, then we'll stop. Sure. Tomorrow I will take a lecture at 7 o'clock. Okay, evening. Tomorrow. Evening 7 or 7:30. Okay, so make sure. So tomorrow at the evening, I'll take a lecture. 7 or 7:30. I'll inform you. So evening we will take a lecture. परम ने लिखा है लेकिन परम कंटिन्यूसली प्रेजेंट था क्या? बीच में गायब थे ना परम? Next, 7 PM. हाँ, we should complete the syllabus. 7 PM क्या होता है? सर्दी होती है 7 PM को. Then चलो. So Param, Manta, Rakshit, Aditya, Vaishali. See, for the study, you should be ready at any point of time. Okay? जो बच्चे IIT के स्टडी करते हैं, for the MSc CET स्टडी करते हैं, उनका अगर अपने YouTube भी लिखा होगा ना लेक्चर का 10 के बाद स्टार्ट होता है, 10 o'clock 11 o'clock लाइव लेक्चर्स होता है, more than 1000 स्टूडेंट ज्वाइन फॉर द लेक्चर. ठीक है, तो याद रखो, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीवन. ठीक है, ठीक है परम, ठीक है. तो वीडियो पुनः बोलूंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज का जितना सीखा है सीरीज सर्किट, दैट्स इट्स टू इंपॉर्टेंट. So आज हमने दो क्वेश्चन लिखे. ओके, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड व्हाट इज सीरीज सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. ओके, चलो. सो स्टॉप हियर. इतने लोग प्रेजेंट है, बाकी सब लगा के बैठे. दिल थिंक कि 10 बजे खत्म. चलो, we'll stop here. We'll meet on tomorrow at 7 or 7:30. I'll give the link. I'll inform you one day prior. तो आज ही inform करूंगा कितने बजे. Sure. So let's stop here. चलो, bye.